Hello students, so in the previous lecture we have discussed about what is an integer. There we discussed various properties of integer, like what are the properties that we have discussed, like closure property, and the second one is the commutative property. Okay, and we got to know that we got to know that both addition and subtraction of integers follow the closure property. तामाने addition और subtraction closure property को follow करंती, and in case of commutative property only addition follows it. केवल addition ही commutative law को follow करे, किंतु subtraction ताको follow करे नहीं. बुझिला? And today in this class we are going to discuss about the remaining two properties of integers. What are they? So let us discuss. ताले कोन दुटा रिमेनिंग प्रॉपर्टी रहि जाय छै जोटा कि हम आज पढिबा ता भितरु दुईटा भितरु फर्स्ट प्रॉपर्टी रो नाम हैला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. So what is associative property? So we will discuss about two operations. एठी हम दुटा ऑपरेशन कथा चिंता करिबा. कोन कोन? फर्स्ट ऑपरेशन हैला एडिशन पाई कोन, और सेकंड ऑपरेशन हैला सब्ट्रैक्शन पाई कोन. अंडरस्टूड? So what is associative property? Let us discuss. Hence here you can see, suppose a, okay, a is an integer. Suppose a is 2, b is another integer, suppose b is 3, okay, and c is another integer, suppose c is -1. So a, b, c are three integers. These are the integers, right? Now let us find a plus b plus c. एबे हमें कोन बाहर करिबा ना a plus b plus c तीनटा को ऐड करिबा, बट कंडीशन कोन? कंडीशन हैला प्रथम क्षेत्र रे बा प्रथम केस रे b और c ऊपर गोटे ब्रैकेट थिबो. ब्रैकेट रो मीनिंग कोन? एज वी हैव ऑलरेडी नो व्हाट इज बदमाश रूल. बदमाश रूल कोन कहला? फर्स्ट हमें कहा ऊपर काम करिबा ब्रैकेट ऊपर, तापरे ऑफ मींस मल्टीप्लिकेशन ऊपर, तापरे डिवीजन, अगेन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो फर्स्ट कहा ऊपर काम करिबा ब्रैकेट ऊपर. देखिला a plus b plus c, ताले हम कोन करिया आगो मिसैबा, माने ए दिरा को मिसैबा ना आगो ब्रैकेट काम करिबा. आगो ब्रैकेट काम करिया, ब्रैकेट भीतर जे भी थिबो ताको आगो मिसैबा बा माइनस करिबा जहां भी थिबो. ओके, सो फाइंड a plus b plus c. So here a is 2 plus b is 3 plus c is -1. Understood? Next, so 2 plus 3, as you know, plus minus ja minus, so -1. Hence 2 plus 3 minus 1 ja 2, 2 plus 2 ja 4. Clear? Now find, this is the first part. Now find same a plus b plus c, but here what is the difference? Here you have to make bracket over the first two term. देखो एठी कोन करा जातला b और c ऊपर गोटे ब्रैकेट रखा जातला, बट एठी कोन करा जिवो समान जिंस मिसा जिवो, बट ब्रैकेट रखा हो का ऊपर a और b ऊपर. बुझियला? सो लिखि दियो, ए जगह रे पुट कर दियो जहां अछि +3 plus -c. okay, 2 plus 3 is 5 plus -1. So 5 plus minus is minus, kete bahala 4. So in this two cases what you find? एगुरा क्षेत्र हम कोन पाइले a plus b plus c रो वैल्यू जेते, a plus b plus c रो वैल्यू b सेते. तार हम कोन लिखि परिबा? So you can write a plus b plus c is equal to a plus b plus c. बुझला कि नहीं? And this property is known as associative property under addition. ताले एडिशन रे कोन होची? जदी हमें तीनटा इंटीजर्स को मिसेबा by changing the bracket, then the result will be same. This is your associative property. ताले एडिशन ता associative property को फॉलो करे कि नहीं? हां फॉलो करे, काहे ना इक्वल टू चिन्ह अछि. बुझिला? एबे हम पढिबा सब्ट्रैक्शन. सेम एग्जांपल नबा हला, a जगह रे 2 नबा, b जगह रे 3 नबा, c जगह रे -1 नबा. अच्छा एटा कोन बाहर करबा? एठी बाहर करबा a - b - c. काहे कि बिकॉज़
इज द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एडिशन हेजे ना हमें प्लस लिखता तो हैला सो ए जगह पुट कर 2 बी जगह 3 माइनस सी जगह है माइनस 1 so 2 minus 3 minus minus plus so it will be 2 minus 3 plus 1 is 4 2 minus 4 is minus 2 because 4 is the larger number and the letter minus अच्छी so डाला minus 2 एबे हमें बाहर करिए कौन समान जिनसा लिखिबा बट ब्रैकेट को चेंज कर दवा हैला सो केते बाहर देखो 2 minus 3 minus minus 1 ओके सो देखो 2 minus 3 केते है -1 कहना बड़ संख्या 3 अच्छा माइनस माइनस कौन है +1 देख लो कौन हो बेटा माइनस सहित प्लस को मिसेबा कौन हम कहिथिली माइनस और प्लस मिसे माने कौन हो सब्ट्रैक्शन हो बुझियला सो 1 minus 1 is 0 so here you see the result for a minus b minus c is -2 but for a minus b minus c is 0 so two results are unequal they are not equal so you can write a minus b minus c is not equal to a minus b minus c that means the subtraction under associative property doesn't hold good okay so write subtraction doesn't follow what associative property बुझिए कि नहीं so this is the third property of integer clear so write down को लिखि दियो वर्तमान हमें पढ़िबा तार नेक्स्ट प्रॉपर्टी जोटा कि हम कहबा लास्ट प्रॉपर्टी and the name of that property is inverse property okay so what is inverse property let us know the last property ताले कोन हे गला जोटा कि d नंबर प्रॉपर्टी inverse property so what is inverse property कौन inverse property कहले हम कौन बुझिबा देखो गोटे एग्जांपल माने कर नियो गोटे इंटीजर ते नियो सपोज 5 इज एन इंटीजर अच्छा वर्तमान भाबो 5 रे केते मिसेइले 0 हो रिजल्ट केते हो 0 हो चिंता करो अच्छा 5 रे जदी मु गोटे पॉजिटिव नंबर मिसौची सपोज 1 मिसेइ ताले केते हो 6 ताले से कोन 5 रो बढ़ी जीवो बुझियाला हमर टारगेट कोन मन रखो हमर टारगेट होजी 5 रे केते ऐड करले हम केते पाइबा 0 पाइबा ओके मन कर आ गोटे पॉजिटिव इंटीजर मिसेइ केते हे जीवो से त आहुरी बढ़ी गला 5 रो बढ़ी जाउनी किंतु मते कोन दरकार 0 दरकार ताले कोन करी 5 रे -1 को मिसेइ दे देखिए केते आंसर बारला 5 प्लस माइनस द -1 4 बारला 0 पाइले ना बट कोन होची ना टिके कमुची 5 रो कमी के 4 हे गला बट एठी के कोन होतला बड होतला नंबरडा बड होतला बुझियला कि एठी कोन होला धीरे धीरे डिक्रीज होची अच्छा एबे कोन करबी 5 रे -2 मिसेबी केते आंसर देखिबा प्लस माइनस द -3 आउ टिके कमिला एबे 5 रे -3 मिसेबी केते अब आंसर 5 - 3 is 2 देखो आउ टिके कमिला एबे 5 रे -4 ऐड करो सो 5 - 4 दैट इज केते 1 आउ टिके कमिला कि नहीं बुझिया कि नहीं हमको दरकार टारगेट 0 पाइबार अछि ताले कोन करबा 5 रे केते ऐड करबा -5 ऐड करो केते होची 5 प्लस माइनस इज 0 ओके सो तुमको कोन करिवार अछि देखिबार अछि गोटे नंबर 5 रे केते ऐड करले रिजल्ट 0 बाहरछि ताले 5 रे केते ऐड करले रिजल्ट 0 बाहरला -5 ऐड करले रिजल्ट 0 बाहरला बुझियाला एंड दैट -5 इज नोन एज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 बुझियला ताले एडिटिव इनवर्स कोन हला 5 रो -5 ताले एडिटिव इनवर्स कहा को कहै छै हमें वर्तमान बुझिबा हला सो you can write -5 is the additive inverse of 5 रे एडिटिव इनवर्स के आसला -5 कोन पे ना 5 रे जदि -5 मिसेबी आंसर केते बारिबो 0 ताले जदि जे कोन सी नंबर है बा जे कोन सी इंटीजर है जेउ इंटीजर को मिसा जाए जदि रिजल्ट 0 बाहरी गला माने करो एटी किछि गोटे इंटीजर अछि मु जानि कोन इंटीजर किछि भी अछि
मन कर सेथिरे एई गुटे इंटीजर को मिसेई हला या भितर 1 थाई पारे 2 थाई पारे 5 थाई पारे 10 थाई पारे -1 थाई पारे किछि भी थाई पारे सो एई गुटे इंटीजर से तो एई गुटे इंटीजर मिसला पर जो रिजल्ट 0 बाहरी गला ताहले मु कहिबे जे एईटा यार एडिटिव इनवर्स बुझिला और एग्जांपल ले जबा सपोज 1 रे मु केते मिसेइले मोर रिजल्ट 0 आसीबो केते मिसेइले देखो जदि मु 1 माइनस 1 मिसेइ दे देखिया के रिजल्ट केते हो 1 प्लस माइनस माइनस 1 0 आछी कि नहीं सो दिस -1 इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ओके सो एडिटिव इनवर्स हेबा कहले दुईटा को मिसेबे जदि आंसर 0 आछो दैट इज द नोन एज द एडिटिव इनवर्स ओके आउट एग्जांपल लबा सपोज एग्जांपल -7 रे केते मिसेले मु 0 पाई देखो -7 रे जदि मु +7 मिसे दिए रिजल्ट केते हेबो माइनस प्लस माने सबट्रैक्शन 7 7 गले 0 सो दिस 7 इज नोन एज एडिटिव इनवर्स ओके ताल देखले एटी कोन होतला जदि मोटी +5 कथा भाबुची तो तार एडिटिव इनवर्स की होची -5 एटी यदि +1 कथा भाबुची तार एडिटिव इनवर्स की होची -1 एटी यदि माइनस कथा भाबुची तार एडिटिव इनवर्स की होची +7 सेमते हम चाहे कहि परिबा -3 रे केते ऐड कले मु 0 पाई ताले -3 रे जदि मु 3 गोटे ऐड कर दिए ताले रिजल्ट केते हबो कहला -3 + 3 जा 0 so 3 is the additive inverse of 3 sorry 3 is the additive inverse of -3 ताले एडिटिव इनवर्स केमति का हम इजीली पाइबा जदि गोटे नंबर रे आ गोटे नंबर को ऐड करला को यदि आंसर 0 बाहर थबो ताले आ गोटे नंबर को सही नंबर रो एडिटिव इनवर्स कहै जाय तुमे भी चाहे एमति कहि परिबो जे -3 होची +3 एडिटिव इनवर्स माने जदि 3 गोटे नंबर देखाय आ क्वेश्चन मागिता है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 सो कोन करे 3 केते मिसेबा -3 मिसेबा 3 - 3 जा 0 so -3 is the additive inverse of 3 or 3 is the additive inverse of -3 बुझियला so this is your additive inverse and now we will discuss about some problems relating to the additive inverse okay so let's start with the first question so here we have to find the additive inverse of the following numbers हमें जो जति के नंबर देछि से मानकर कोन बार करबा एडिटिव इनवर्स बार करबा ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन देछि so the first question you have to find the additive inverse of -11 that means what should be added to -11 to give 0 ता माने -11 रे केते ऐड करले हमें कोन पाइबा 0 पाइबा that is the additive inverse so if we add +11 in -11 then what will be the result as you know minus plus means they are being subtracted minus plus माने कोन की minus plus माने पर minus माने कोन subtraction होबो बुझिया लागले subtraction हला 11 वाला केते रहबो 0 so -11 रो एडिटिव इनवर्स केते हला एटा हो एडिटिव इनवर्स कि नहीं so -11 रो एडिटिव इनवर्स हला केते 11 बुझिला लेखि बता कोनते the additive inverse of -11 is 11 बुझिला next what is the additive inverse of 20 20 रे additive inverse केते ताले 20 रो केते ऐड करिले हम केते पाइबा 0 पाइबा सो केते ऐड करबा अच्छा 20 रो साइन कोन अछि प्लस ताले एते केते ऐड करले हम 0 पाइबा -20 हां कि नहीं देखिए चेक कर देबा so here 20 plus minus ja minus so 20 minus 20 ja 0 so this -20 is the additive inverse of 20 or plus ताले 20 additive inverse केते हला -20 अच्छा गोटे जिंस हम लक्ष्य रखुचे हमें जहार भी एडिटिव इनवर्स बाहर करूचे जहार भी एडिटिव इनवर्स बाहर करूचे
सपोज -11 न बाहर कले तार एडिटिव इनवर्स केता होची +11 हां कि नहीं अगेन जदि 20 रे एडिटिव इनवर्स हम बाहर करबा तार एडिटिव इनवर्स केता होची -20 so in order to find the additive inverse you have to just change the sign देखो जदि हमें -11 रे साइन केते अछि माइनस अछि हमें यदि माइनस टा को साइन को चेंज कर दबा केते आसीबो +11 आसला कि नहीं सेही +11 टा कोन होता एडिटिव इनवर्स हो एक्जेक्टली एठी देखो 20 आगु केते अछि किछ नै माने प्लस अछि तार सिंबल कोन प्लस जदि मोर साइन टा को चेंज कर दिए केते हि जिवो -20 हि जिवो कि नहीं and that -20 is the additive inverse for example suppose 2 हला 2 गोटे नंबर अछि तले 2 रे केते ऐड कले मो 0 पाइबी किछि भी भाबी माने डायरेक्टली भाबी होय जदि मो 2 को तार साइन चेंज कर दिए 2 माने केते अछि प्लस तार साइन चेंज होले केते हिजो -2 हां कि नहीं देखिए ऐड कर दियो so 2 plus minus a minus केते बाला 0 so -2 is the additive inverse of 2 ताले in order to find the additive inverse then you have to just change the sign okay you have to just change the sign for example if a is an integer a is an integer a टा केते देने 1 की 2 की -10 किछि भी देने खाली गिवन अछि a is an integer and you have to find the additive inverse of a एर additive inverse केमिति का पाइबो तुम कोन कहले आगो देखिबो एर साइन कोन अछि किछि नै माने कोन अछि प्लस अछि तार तर जे एडिटिव इनवर्स हेइथिबो तार साइन कोन हबो माइनस ए बुझिया ताले एर एडिटिव इनवर्स केते हबो माइनस ए हबो अच्छा जदि माइनस बी कोडे क्वेश्चन देता है कोइ है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी देन व्हाट इज इट्स एडिटिव इनवर्स ताले एडिटिव इनवर्स केते हबो केवल साइन चेंज कर दबा इति साइन कोन अछि माइनस एति कोन हिजो प्लस बी so plus b is the additive inverse of minus बुझिए ना so एमिति का हम एडिटिव इनवर्स बा करे बोले केवल साइन को चेंज करी देबा so चाहिले एटा ଗୋଟେ नोट लिखि परिबो in order to find the additive inverse you have to change the sign only बुझिला सो ओनली साइन को चेंज कर देबे एडिटिव इनवर्स इजीली पा पाए सो एथरा कोन एठी देखो क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन -2 तले -2 रे एडिटिव इनवर्स केते हबो साइन चेंज कर दियो कोन हिजो +2 एबे हम आंसर ठीक अछि ने वेरीफाई भी कर परिबो -2 रे +2 मिसाओ माइनस प्लस कोन सबट्रैक्शन 0 है एग्जैक्टली आउट क्वेश्चन आसला कौन से क्वेश्चन टा -7/3 हैला लिखा गया सेटा को -7/3 अच्छा एटा फ्रैक्शन कि नहीं तो हमें बाहर करबा एथरे केते मिसेले 0 होबो जेते मिसेले 0 होबो दैट इज द एडिटिव इनवर्स अच्छा केमति का एडिटिव इनवर्स बाहर करबा आगो देखियो त साइन कोन अछि माइनस साइन चेंज कर दियो प्लस बाकी नंबर तक लिख दियो सो व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/3 +7/3 बुझियला you can also check भी करि परिबा देखिया केमति का ना को मिसाओ जदी 0 बाहर तो तले आंसर करेक्ट अछि अच्छा केते हो देखो -7/3 +7/3 आगो केमति का ऐड करा जाय आई हैव टोल्ड यू इन क्लास 6 3 3 एलसीएम केते 3 -7 +7 एटा न्यूमरेटर को आसे कि नहीं माइनस प्लस माइनस 7 - 7 का 0/3 so 0 by any number except 0 by any number is 0 तो आंसर 0 बारला तो आंसर करेक्ट नेक्स्ट 4/5 एडिटिव इनवर्स केते हो -4/5 काई यदि प्लस साइन चेंज कर दो -4/5 बुझियला very easy to understand and the last but not the least question what is the additive inverse of 0 सब जगह किछ ଗୋଟେ इंटीजर दोथला either negative integer or positive integer बुझियला it is not the integer these are the fractions okay but here there is a special number 0 here special number अछि 0 ताले 0 रो एडिटिव इनवर्स केते कहा को एडिटिव इनवर्स कहा जाय ना गोटे नंबर रे केते ऐड कला में 0 पाइबो अच्छा 0 रे केते ऐड कले
आम 0 पाइबा केते ऐड कले सही 0 ही ऐड करिया को पड़िबो 0 रे 0 ऐड कले ही आम 0 पाइबा हैला 2 रे सिना तुमे -2 ऐड करे 0 पाउथलो बट 0 रे केते ऐड करिवो 0 ही ऐड करिवो so that 0 is known as the additive inverse of 0. This is the additive inverse. If there is a question, what is the additive inverse of 0? Same 0 is the additive inverse of 0. बुझिला कि नहीं 0 निजर ही गोटे additive inverse. So you can write another note that 0 is a number which is the additive inverse of itself. 0 is एमिति गोटे नंबर जे कि निजर एडिटिव इनवर्स व्हाई बिकॉज़ 0 को केवल 0 सहित ही मिसैले हमें 0 पाए सो if a question asks you which one is the additive inverse of itself then you can write 0 is the additive inverse of itself बुझियला so this is all about the concept of additive inverse understood next one is additive identity okay what is that additive identity okay what is additive identity suppose गोटे नंबर नियो 6 ओके एबे कोन करो 6 रो एडिटिव इनवर्स केते बाहर करो केते -6 अच्छा दुइटा को मिसै दियो केते बाहर देखिया प्लस माइनस है माइनस केते बाहरला 0 बाहर and that 0 is known as additive identity so 0 is known as additive identity out example हम देखि बुझी परिबा suppose -2 रे कोन करो तार एडिटिव इनवर्स बाहर करो केते +2 एबे दुटा को ऐड कर दियो केते बाहर 0 and that 0 is known as additive identity so what is additive identity 0 is called additive identity 0 को ही additive identity कहते हैं तीनटा नोट हमें पढ़िले बुझियला additive inverse पाइयो गेले हमें साइन को चेंज कर दबा और सेकंड नोट ता है कोन ना 0 रो additive inverse हो से निजे and third is the 0 is known as the additive inverse sorry additive identity बुझियला कि नहीं so 0 is known as the additive identity आ गोटे जिंस भी हम लक्ष्य रखले कोन लक्ष्य रखले देखला जदी गोटे नंबर रे तार एडिटिव इनवर्स को हमें मिसई दोछे बा ऐड कर दोछे देन द रिजल्ट विल बी 0 if a number is added with its additive inverse then the result is 0 here also 2 is a number its additive inverse is -2 when they are being added they give 0 so when a number is added with a additive inverse of itself then the result is 0 okay so write another note if a number is added with its additive inverse then the result is 0 ताले गोटे नंबर को हमें तार एडिटिव इनवर्स सहित ऐड करिबा ताले रिजल्ट हमें केते पाइबा 0 पाइबा अंडरस्टूड